Good morning to all. Myself Manisha Bagania. Today's my presentation is placenta examination. So, firstly, introduction. The placenta is crucial for fetal growth and survival, performing the most important functions of many somatic organs before birth. Thus, pathology process interfering with a placental function may result in abnormalities of fetal growth or development, malformation, or stillbirth, and there is an increased recognition that some long-term disability can be tracked to injury occurring before birth. प्लेजेंटा प्लेजेंटा बेबी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये मतलब ये एक ऑर्गन है जो बेबी बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेबी के लिए फ्रूट न्यूट्रिशन देने के लिए प्लेजेंटा में एबनॉर्मलिटीज़ भी होती है। व्हाट इज अ प्लेजेंटा? दिस इज अ फिटोमैटर्नल ऑर्गन। प्लेजेंटा एक फिटोमैटर्नल ऑर्गन है। इट हैज़ टू कंपोनेंट। प्लेजेंटा में टू कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, फिटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। फिटल पार्ट डेवलप फ्रॉम द कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम and maternal part derived from the deciduum. The placenta and the umbilical cord are the transport system for substances between the mother and the fetus. जो प्लेजेंटा होता है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब उसमें अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है जो मदर से फिटस तक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करती है। देन डेफिनेशन: through inspection and examination of the placenta and the membrane soon after expulsion for its completeness and normalcy. एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन के थ्रू हम पता करते हैं कि प्लेजेंटा की मेम्ब्रेन या फिर उसका एक्सपेल्शन कैसा है, या फिर वो नॉर्मल है या नहीं, या उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी है या नहीं। प्लेजेंटा एट टर्म, दिस इज अ फ्लेसी। प्लेजेंटा का वेट 500 ग्राम होता है। डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर्स। थिकनेस होती है उसकी 2.5 सेंटीमीटर। स्पंजी टू फिल, इसको फिल करते हुए स्पंजी टाइप होता है। ऑक्यूपीज 30% ऑफ द यूट्राइन वॉल्स, इसका ऑक्यूपीज 30% होता है यूट्राइन। टू सब सरफेक्स होते हैं, maternal and fetus, and 4th-5th of the placenta is of fetal origin and 1 and 5th is maternal origin. जो 4th and 5th ओरिजिन वो fetal origin होता है, एंड जो 1 से 5th तक होता है वो maternal origin होता है। प्लेजेंटा फ्लेसी होता है, इसका वेट 500 ग्राम होता है और डायमीटर इसका 50 से 20 सेंटीमीटर होता है। ये 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। ये इसको फिल करते तो स्पंजी होता है और 30% ऑक्यूपेस होता है। इसमें टू सरफेस होती है जो मैटरनल एंड फीटल की। जो फीटल की है वो 4th से 5th फीटल ओरिजिन होता है। मैटरनल में 1 से 5th ओरिजिन होता है। This is maternal surface and fetal surface. Irregular, divided into convex area, and fetal surface is smooth, transverse, covered by amnion with umbilical cord attached near its center and umbilical vessels radiating from it. Maternal surface. Cotyledons. About 15 to 20 slightly bulging villous area. Their surface is covered by threads of decidua basalis from the uterine wall. After birth, the placenta is always carefully inspected for missing cotyledons. Cotyledons remaining attached to the uterine wall after birth may cause severe bleeding. Then fetal surface. This site is smooth and shiny. It is covered by amnion. ये साइड जो फीटल सरफेस साइज होते हैं वो स्मूथ होता है, वो शिनी टाइप का होता है,
और इसको कवर करता है इम्यून। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेजेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड इससे अटैच होती है सेंटर में, प्लेजेंटा के सेंटर में। द अम्बिलिकल वेसल्स रेडिएटेड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, दे ब्रांच ऑन द fetal surface to form chorionic vessels. They enter the chorionic villi to form anterior capillary and venous system. Next is purpose. To ensure that the entire placenta and membranes have been expelled and no part has been remained. To make sure that placenta is of normal size, shape, consistence and weight. प्लेजेंटा मतलब श्योर करने के लिए कि प्लेजेंटा का साइज शेप नॉर्मल है या नहीं, या वेट उसका नॉर्मल है या नहीं, कंसिस्टेंसी। टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज सच एज इन्फेक्शंस, कैल्सिफिकेशंस एंड एडिशनल लॉब्स। डिटेक्ट करने के लिए प्लेजेंटा के एनी एबनॉर्मलिटीज़ को, उसके लॉब्स को, इन्फेक्शंस को एंड कैल्सिफिकेशंस को। देन to detect the length of the cord, number of blood vessels and site of insertion of the cord. प्लेजेंटा की लेंथ ऑफ द कॉर्ड और नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन कॉर्ड के डिटेक्ट करने के लिए। टू चेक वेट ऑफ द प्लेजेंटा एंड मेजर लेंथ ऑफ द कॉर्ड। प्लेजेंटा के वेट को चेक करने के लिए, उसकी लेंथ को मेजर, कॉर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए। देन आर्टिकल प्लेजेंटा इन अ बॉवेल, a washable surface to lay the placenta for examination, wetting machine, measuring tape, kidney tray, one pair of clean gloves. Placenta developed from chorionic fundusum and decidual. Fundusum is fetal component and decidual is maternal component. It begins at 16 weeks and completed by 12 weeks. ये स्टार्ट होता है 6 वीक्स से एंड कंप्लीट हो जाता है 12 वीक्स में प्रेगनेंसी के। सर्कुलर डिस्क डायमीटर ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, इट इज़ थिक। वेट 300 to 500 grams, one and half six of the body weight. To surface maternal and fetal. Placenta. Margins of the placenta are formed by fused chorionic and the basal plate. Placenta is attached to the upper part of the uterine body, either at the posterior or anterior wall. After delivery, placenta separate with the line of separation begins through decidual spongious layer of the decidual bacillus. Functions: fetal respiration, fetal alimentary, fetal excretory, fetal burial function, immunological and enzyme. Placenta gross abnormalities. Abnormalities of placentas. Large placenta, splasidium and placenta subscancuata. Placenta membranes, placenta circumvallate, Batellaria placenta and single matrices. Placenta gross abnormalities. Batellaria placenta and voluminous insertions of cord. Abnormalities of placenta. This is abnormalities. Placenta percurata. The placenta at left implanted over the cervical os. This is placenta increta. The placenta has
invalidate the myometrium almost to the serosa. This is placenta increta. The structure of placenta. Placenta is the limited by the amniotic membrane on the fetal side and by the basal plate on the maternal. Between these two lies the intervillous space filled with maternal blood and the terminal villi. Amniotic membrane. Single layer of cuboidal epithelium loosely attached to adjustment chorionic plate and does not take part in placenta formation. Chorionic plate forms the roof of the placenta from outside inward, considered of syncytiotropoblast and cytotropoblast and extramembryonic mesoderm with branches of umbilical vessels. Residual definition: it is the function layer of endometrium of the gravid uterus. It includes the endometrium of fundus and body of the uterus. The endometrium of the cervix does not form a part of decidual. If steps of formation, decidual reaction. The endometrium becomes thick and more vascular. The endometrium glands become full of secretion. The connective tissue cells enlarge due to accumulation of lipid and glycogen. They are called decidual cells. Decidua. Decidua bacillus. It lies at the site of implanted. It forms the maternal part of the placenta. Decidual capillaries. It covers the concept decidual peritales. The rest of the endometrium that lines the body it in the fundus. This is umbilical cord, bluish white cord about 50 cm long and 1.5 cm diameter. Thank you.